Hello everyone, welcome to Score High. I'm Arshita Agarwal and in a current affairs analysis series, today we'll be discussing that China has recorded third case of deadly bubonic plague. तो चाइना में तीसरा केस आया है बुबोनिक प्लेग का। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बुबोनिक प्लेग के बारे में और चाइना की इस स्टोरी के बारे में। Now, China's Inner Mongolia has reported a fresh confirmed case of bubonic plague despite an earlier declaration by the country's health officials that a risk of an outbreak was minimal. तो चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में अभी नया केस आया है बुबोनिक प्लेग का जो कंफर्म्ड केस है। क्या है बुबोनिक प्लेग? It is caused by a bacterium Yersinia pestis. Remember this name? And it is the most common form of plague globally. It is caused by the bite of an infected flea, and it affects a person's lymphatic system, which is a part of the immune system. The plague bacteria, it travels through the lymphatic system to the nearest lymph node, where it replicates itself. The lymph node then becomes inflamed and painful, and it is called a bubo. It can advance and spread to the lungs, becoming a more severe type called pneumonic plague. And there's human-to-human transmission of bubonic plague is rare, and its symptoms include fever, chills, weakness and headaches. तो जो बुबोनिक प्लेग होता है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है जो है यर्सिना पेस्टिस। सबसे कॉमन प्लेग है ग्लोबली और ये इन्फेक्टेड फ्ली की वजह से होता है। ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको इन्फेक्ट करता है और वो क्या होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम से ट्रैवल्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम जो नियरेस्ट लिम्फ नोड होगा उसमें, और वो लिम्फ नोड फिर स्वेल कर जाएगा और दर्द करेगा। उस स्वेल्ड इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड को बुबो कहते हैं। अब ये जो प्लेग होता है ये लंग्स में भी फैल सकता है और तब इसे न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफ़ी रेयर है, इतनी आसानी से नहीं होता। सिम्टम्स क्या है? जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, हाई फीवर, ब्रीदिंग कंस्ट्रिक्शन, ओपनिंग ऑफ स्वॉलन बुबोज, जो नोड्स होते हैं वो खुल जाए, गैंग्रीन ऑफ टोज, फिंगर्स, लिप्स और नोज, सीजर्स, एक्सट्रीम एग्जॉशन एंड पेन। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जो नहीं समझ में आएंगे बुबोनिक प्लेग के। नाउ व्हाट इज प्लेग फर्स्ट? Plague is an infectious disease that can become severe if left untreated. If diagnosed early, it can be treated with antibiotics and supportive care. तो ये एक infectious disease है। Plague is caused by a bacteria usually found in small mammals and their fleas. जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसमें, वो बैक्टीरिया कौन सा है? Yersinia pestis, एक जूनोटिक बैक्टीरियम है। यूजुअली रोडेंट्स में तो पाए जाते हैं। Now, people infected with plague usually have flu-like symptoms within 1 to 7 days of contact. तो ये सारे जो symptoms है कोल्ड जैसे symptoms है, जिसे फ्लू हुआ हो वैसे symptoms होते हैं। Now, the most common type of plague affects the lymph nodes, जो bubonic plague होता है, and it can be severe, but there is no human-to-human transmission. फिर होता है जो deadliest होता है और most rapid form होता है जब वो lungs में पहुंच जाता है, and it can be transmitted person to person via droplets in the air, क्योंकि वो lungs में पहुंच गया है। Now, plague was known as the Black Death. This is important in the Middle Ages, क्योंकि उसकी वजह से तकरीबन 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी यूरोप में। In modern era, between 2010 to 2015, around 3,200 people were infected with plague worldwide, and of it, 584 people died. Now, plague is most common in Madagascar, Democratic Republic of Congo, and Peru. However, the potential plague natural foci are distributed worldwide. तो जो most common है वो अफ्रीका में यूजुअली है और एक साउथ अमेरिकन कंट्री में, मेडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और पेरू। This we have read that it is transmitted between animals through fleas, and it is transmitted in humans through the bite of an infected vector fleas, unprotected contact with infectious bodily fluids, or inhalation of respiratory droplets from plague patient. तो inhalation वाला जो होता है वो तुम्हारा pneumonic plague में होता है, ये हमने जो पढ़ा, ठीक है, pneumonic plague में। और infected fleas से होता है जो bite अगर वो काट लें या bodily fluids से।
Treatment. The plague, though life-threatening, can be treated with antibiotics and some extra oxygen are required to treat a person. Basically, fresh air चाहिए. Preventive measures include to keep the rodent population in control with pest control measures and ensuring that surrounding areas are clear of stacks of wood that rodents feed. तो basically जो चूहों की population है उसको control करना है. There are types of plague. This we have discussed. First is bubonic plague. We have discussed it. Then we have pneumonic plague, which is lung-based plague. Now, it is the most virulent form of plague and can be fatal within 24 to 72 hours. Now, it affects when bacteria infect the lungs, and it is the only type of plague that can be transmitted from human to human. The statement is important. And it is highly contagious and transmissible merely by coughing. तो ये ऐसा प्लेग है जिसमें 24 से 72 आवर्स बहुत ही फेटल हो सकते हैं. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है क्योंकि ये कफिंग से भी ट्रांसमिट हो सकता है. देन देयर इज septicemic plague. It occurs when the bacteria enters the bloodstream and multiplies there. Now, if left untreated, pneumonic and bubonic plague can lead to septicemic plague. And a person infected by the septicemic plague may also notice their skin turning black. तो जिसको septicemic plague हो गया उसकी skin black turn हो जाती है. Now this was all about the bubonic plague. For other current affairs updates, you can visit our website, that is www.scorehigh.com. Or you can even follow us on Instagram. Our Instagram handle is score_high. So that's all for today. We will be meeting again with a new topic. Thank you so much.